Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari Sodanandana Bhaja Jaranjanaya Jasodanandana Bhaja Jaranjanaya Yamuna Tira Heaven Harimu Yamuna Tira Heaven Harimu Hidayara Madhava Punjabihari Hidayara Madhava Punjabihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bhol, Hari Bhol, Hari Bhol, Hari Bhol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Jai Guru Dev. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Prabhupada ki jai.
So today we're beginning the most auspicious month of Damodar. It's also known as Kartik. It's also known as Ujjaishwari. It's also Radharani's month too. She's called Ujjaishwari. कृष्ण तो कार्तिक महीना जो कि सबसे पावन है वह प्रारंभ हो रहा है और श्रीमती राधा रानी के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो उन्हें उर्जेश्वरी भी कहा जाता है. So I was contemplating to speak a little bit about the Leela that we all are quite familiar with, and that's Krishna as Makan Cho. तो मैं उस लीला के बारे में प्रवचन करने का विचार कर रहा था जिसके बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं, उनकी माखन चोर की लीला. It's a beautiful Leela. It actually illustrates Krishna's diverse qualities, that he can be a thief, be a sweet little boy, can be whatever he wants to be. यह कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला है जिसमें कृष्ण बहुत ही विविधता वाली भूमिका निभाते हैं. वो एक चोर भी बन सकते हैं, एक छोटा सा मधुर बालक, और या फिर वो जो भी रूप रखना चाहें वह रूप रख सकते हैं. I should also mention that this month there are many holy days to honor the appearance and disappearance of great souls. Along with this month is also Diwali and also Govardhana Puja, and specifically it's also Srila Prabhupada's disappearance. All of these days will be part of the Kartik month. तो ये जो महीना है इसमें बहुत ही सारे शुभ दिन, बहुत ही शुभ आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि आती है. इसमें दिवाली, गोवर्धन पूजा और सबसे महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि भी आती है. And the scriptures also say that whatever service you do in this month, you get twice the spiritual credits as you would normally get during the year. तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो भी आप इस महीने में आध्यात्मिक क्रिया करेंगे उसका 2 गुना फल आपको मिलेगा. And if you go to Sri Vrindavan Dham, then the credits are multiplied unlimitedly. और अगर आप श्री वृंदावन धाम जाते हैं तो आपका जो आध्यात्मिक श्रेय है वह अनंत गुना बढ़ जाएगा. It's a very wonderful opportunity to make spiritual advancement and to really go deeper into our practice of Krishna consciousness. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है कृष्ण भावना भाव को अभ्यास करने का और कृष्ण भक्ति में और भी ज्यादा निमग्न होने का. Okay, so Krishna's father, Nanda Maharaj, he had 900,000 cows. भगवान कृष्ण के पिता नंद महाराज के 9 लाख गायें थी. You might say, well, how can they fit 900,000 cows into Vrindavan? फिर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि भला ये 9 लाख गायें वृंदावन में कैसे आएंगी. Don't try to figure it out. They're not stacked up on top of each other either. तो आप इसको समझने का प्रयास नहीं करिए. The Dham is not part of the material world, and so it also displays characteristics of the spiritual nature, which means it's also unlimited. तो वृंदावन भौतिक जगत का भाग नहीं है, वह आध्यात्मिक जगह है और उसका जो स्वभाव है वह भी आध्यात्मिक है. Well, the materialists, they see the Dham as just being some dirty place with pigs and dogs running around and, rickshaw wallahs trying to take your money. तो जो कर्मी लोग हैं वो वृंदावन को एक ऐसे ही जगह के रूप में देखते हैं जहाँ पे कुत्ते हैं, सुअर हैं और वहाँ पे कोई किसी का पैसा भी चुराता रहता है. There was one, he was actually a devotee who was practicing Krishna consciousness in Germany. He was from Germany. He decided to go to Vrindavan. एक जो भक्त हैं वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना शुरू किए थे. उन्होंने निर्णय किया कि वे वृंदावन जाएंगे.
And as he got to the area of Mathura, he started to see all of the apparent material deficiencies in the atmosphere. लेकिन जब वो मथुरा की सीमा पे पहुंचेंगे तो वो तथाकथित रूप से जो मथुरा में कुछ कमियां हैं उसको देखने लगे। And this bewildered him. उससे वह भ्रमित हो गए। He was expecting to see something else, something better, at least from a material perspective. तो वो कम से कम भौतिक दृष्टिकोण से ही कुछ अच्छा सोचने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा दिखा नहीं। As he continued to get into the precincts of the Vrindavan, he could see pigs, dogs, and monkeys, and rickshawallas, and many other things that seems to be not beneficial for an atmosphere that is meant to be pure spirituality. और फिर जैसे ही वो वृंदावन की ओर आगे बढ़ते गए, उनको कुत्ते, सुअर, बंदर, रिक्शा वाला ये सब दिखते गए। मतलब उनको ऐसा दृश्य दिख रहा था जिससे कृष्ण भावनामृत के भाव में उनको वृद्धि नहीं हो रही थी। So it says that he turned around and left. He was not happy seeing Vrindavan through his own limited vision. तो फिर वो उस दृश्य को देखकर खुश नहीं हुए और लौट गए। One cannot see Vrindavan with these eyes. Premanjritam bhakti vilochanena santas sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundar chinta guna sarupam govindam adipurusham tamaham bhajami. Only when eyes are tinged with the element of bhakti, and then one can start to have spiritual vision, and then that spiritual vision one can see things as they are. तो कोई भी वृंदावन धाम को भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकता जब तक वह अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन नहीं लगा सकता है, तब तक उसकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी और वह वृंदावन का नहीं दर्शन कर पाएगा। Because every particle of dust in Vrindavan is called Chintamani. That means it can fulfill the desires of the living beings. वृंदावन की जो प्रत्येक रज है उसको चिंतामणि कहते हैं, यानी कि वह सारे जो जीव हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। And it says one who rolls in the dust of Vrindavan will get love of God. ऐसा कहते हैं जो वृंदावन की रज में लोटपोट करता है उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। Provided you don't shake the dust off when you're done. लेकिन आपको वो शरीर से धूल झाड़ना नहीं है। You ready? Okay. So Maharaj Nanda had 900,000 cows. नंद महाराज के 9 लाख गाय थी। And him and his wife were concerned. Mother Yasoda, you know, we have so many cows and so many nice milk products, but our little Lao, he's running this way and that way, going to other places and stealing people's butter and milk products. तो फिर उनकी ये चिंता थी कि हमारे पास इतनी सारी गाय हैं, इतने सारे बछड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो छोटा सा बच्चा है वह इधर उधर दूसरों के घर में जाके चोरी करता है, वहां पे माखन खाता है। So maybe our butter is not good enough. तो लगता है हमारा मक्खन अच्छा नहीं है। So I have a plan. तो हम एक योजना बनाते हैं। He told his wife, we're going to make the best butter, the best milk products, so Krishna can't possibly leave. वो निर्णय करते हैं कि हम सबसे बढ़िया उत्तम गुणवत्ता का मक्खन बनाएंगे जिससे अच्छा कृष्ण को कहीं मक्खन मिलेगा ही नहीं। So they decided to come up with the best of all best milk products. तो फिर उन्होंने सोचा कि हम सबसे बढ़िया से भी बढ़िया मक्खन बनाएंगे। So Nanda Maharaj picked the best 1,000 cows out of the 900,000, and he milked those 1,000 cows. तो फिर नंद महाराज ने 9 लाख में से सबसे बढ़िया 1000 गायें चुनी और उनका दूध निकाला। And then he fed that milk to the best 100 cows. और उस दूध को उन्होंने जो उनकी 100 सबसे बढ़िया गायें थी उनको पिलाया। And he took that milk from the best 100 cows, he milked those, and fed it to the best 10 cows.
और उन 100 सबसे बढ़िया गायों का दूध निकाल के उन्होंने फिर जो 10 सबसे बढ़िया गायें थी उनको दूध दिया। Then milking the best 10 cows, he gave it to the best cow. और फिर उन 10 गाय का दूध उन्होंने सबसे बढ़िया वाली जो एक गाय थी उसको दिया। And that milk was to be used only for Krishna. और वो जो दूध था वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही उपयोग किया जाने वाला It's था। described, it was called param ganda, that its fragrance would just permeate the air with such sweetness and such natural aroma that everyone would think, oh, wow, this is so nice. तो वो जो गाय थी उसको पद्मगंधा कहा जाता था और उसका दूध इतना सुंदर सुगंध से पूरे के पूरे वातावरण को भर देता था कि सबको लगता था कि वाह कितनी सुंदर सुगंध है। So one day Mother Yasoda put some of that milk on the stove. She was preparing it for Krishna. तो एक दिन माता यशोदा ने उस दूध को चूल्हे पर रखा था और वो कृष्ण के लिए ही मक्खन बनाने की तैयारी कर रही थी। But Krishna, he was peeking outside of his door in his little room and he saw his mother and he became hungry. और कृष्ण जो कि कमरे के बाहर से अपनी माँ की ओर देख रहे थे और फिर वो उस समय भूखे हो चुके थे। And so he ran towards his mother. फिर वो दौड़कर अपनी माता के पास She गए। welcomed him. माता ने उनका स्वागत किया। And he sat on her lap. वो माता की And गोद she में बैठ गए understood he wanted some of her milk. और इस प्रकार से जैसे वो माता से कुछ अनुमोदन चाह रहे हो। So she was feeding him very nicely. माता उनको स्तनपान करा रही थी। And Krishna was enjoying. कृष्ण आनंद ले रहे थे। Mother Yasoda was happy. माता भी खुश थी। She started to sing. वे गीत गाने लगी। And she was singing very nice songs. बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गा रही थी माता यशोदा। It's described before that she was churning butter also. और गीत गाने के पहले ऐसा वर्णन आता है कि वह And the ladies, they have all of these nice, what we say, precious bangles. वह गीत Made out of very silver and gold and various jewelry. वह मक्खन मथ रही थी और उन्होंने अपने हाथ में सोने चांदी की चूड़ियां भी पहन रखी थी। And when she was churning, all of these bangles were making noise and it sounded like kirtan. तो जब वो मक्खन मथ रही थी तो सारी चूड़ियों से भी बहुत ही सुंदर आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कीर्तन हो रहा है। And she was singing at the same time. वह गीत भी गा रही थी उसी समय। That's when Krishna came out. उसी समय कृष्ण बाहर आए। So now she's happy. Krishna's sitting on her lap. She's giving him her milk, and he doesn't want to go anywhere else. तो उस समय कृष्ण आकर माता की गोद में बैठ गए थे। माता का स्तनपान कर रहे थे और कृष्ण को भी कुछ नहीं चाहिए था और माता भी खुशी से दूध ला रही थी। And this was going on for some time. ये कुछ समय तक चलता रहा। But the milk was on the stove. लेकिन जो दूध है वो चूल्हे पर भी था। And then the milk started to boil over. और फिर वह दूध उबलने लगा। Why did the milk boil over? वो दूध उबलने क्यों लगा? Because the milk was thinking. क्योंकि जो दूध था वो सोच रहा था Mother Yasoda has unlimited love, therefore she has unlimited milk. Therefore, Krishna will never drink me, so I should commit suicide. क्योंकि वो दूध सोच रहा था कि माता यशोदा के पास असीमित प्रेम है, यानी कि उनके पास असीमित दूध है जो कि कभी खत्म होगा ही नहीं, तो कृष्ण को मेरी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। This is Jiva Goswami's explanation. ऐसी श्रील जीव गोस्वामी टीका करते And the हैं। milk was boiling like hitting the stove. इस प्रकार से वो चूल्हे पे कूद के आत्महत्या कर रहा You था। have to translate that other part too. Do the Hindi version. Okay, he did it. At least you can learn next time you can do it. And then Mother Yasoda started to think, well, that milk is for Krishna and it's boiling over. We're going to lose all that nice milk. So she put Krishna down and then she went to take care of the milk. और फिर माता यशोदा ने सोचा कि अगर पूरा का पूरा दूध बह जाएगा तो फिर कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा, तो उन्होंने कृष्ण को गोद से उठाया और दूध देखने चली गई।
And then Krishna was thinking, where did my mother go? फिर कृष्ण सोचने लगे, अरे मेरी माता किधर चली गई, And he became unhappy और वो क्रुद्ध हो गए, and became angry. वे गुस्सा गए, So he decided to do some mischief. और फिर वो सोचे कि आप थोड़ा शरारत करते हैं. So he ran in the other room where the butter pot was hanging high on the rafters. He वे ran into another room where the butter pot was high up. तो वे दूसरे कमरे में गए जहां पर छीके से मक्खन लटका हुआ था. He wanted to get the butter, but he couldn't reach it. वो मक्खन देख तो पा रहे थे लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे. So there was a grinding mortar there. तो फिर वहां पर Big stone grinding mortar. वहां पर ऊखल रखा हुआ था, It's heavy. बहुत ही भारी ऊखल था, But he dragged it, लेकिन उन्होंने उसको खींचा, stood on top, उस पर खड़े हो गए, reached into the butter pot, मक्खन के बर्तन तक पहुंच गए, and as soon as he was about to eat, और जैसे ही उसको खाने वाले थे, guess who comes? Monkeys. Dahi loba. He's greedy for dahi. तो फिर वहां पे बंदर थे, उनको खिलाने लगे. And so Krishna is distributing the butter to the monkeys. He's eating it himself, and he's spilling all over the floor. And everyone's having a good time. Place is a mess. तो कृष्ण मक्खन खाने लगे, बंदरों को भी खिलाने लगे, नीचे इधर उधर मक्खन पलट भी दिया, सब लोग खूब मजे ले रहे थे. So what's the significance of the monkeys तो इसमें in this pastime? इस लीला में बंदरों की क्या भूमिका है या महत्ता है? This pastime of Krishna performing this pastime of stealing butter happens on Diwali. ये जो बंदरों को मक्खन खिलाने वाली या फिर ये जो दामोदर लीला है, ये दिवाली के दिन हुई थी. And Diwali, we know, is the celebration of Ram and all of his associates returning to Ayodhya after being in the forest, after killing Ravana and then being in the forest for 14 years. और ये दिवाली का दिन यह भी उत्सव है जिस दिन भगवान राम के आगमन को लोग मनाते हैं, भगवान राम के विजय के रावण पर विजय और भगवान के 14 वर्ष बाद अयोध्या पुनरागमन पर. So Krishna arranged for the monkeys to come because he wanted to congratulate all of the monkeys for helping to serve his incarnation as Ram when they defeated Ravana and recaptured Lanka. तो फिर उस दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण बंदरों को मक्खन खिलाकर यह सूचित करना चाहते थे कि वह उनको एक बधाई के रूप में देना चाहते थे कि आप लोगों ने हमारी जो लंका पर विजय में सहायता की थी, उसके लिए ये मक्खन था. That's why it happened on the Diwali day, because that's the day that Ram returned. तो इसीलिए उन्होंने यह लीला दिवाली के दिन थी कि जिस दिन राम वापस आए थे. But Krishna now, he's stealing the butter, he's eating it, he's giving it to the monkeys, he's dropping it on the floor, but he's looking this way, that way, this way, that way, this way, that way, thinking, I hope my mother doesn't see me. तो कृष्ण सिर्फ अपने ही नहीं खा रहे थे, वो बंदरों को खिला रहे थे, नीचे गिरा रहे थे और इधर उधर इधर उधर इधर उधर देख रहे थे कहीं माँ तो नहीं आ रही है. But then Mother Yasoda comes back and she notices Krishna's gone. और फिर माता यशोदा आती हैं और उनको पता चलता है कि कृष्ण कहीं इधर उधर चला गया है. But she sees all these butter footprints all over the floor. और वो हर जगह नीचे जो उनके मक्खन लगे हुए पदचिन्ह थे उनको देखती हैं. That rascal. और फिर वो उनको लगता है ये दुष्ट लड़का कहाँ चला गया. And so then she goes into the other room and she sees, there Sri Radha, Madan Mohan, Krishna Balaram, Gaurnitai, Jagannath Baladev, Subhadra Maharani, Prahlad Nisringadev, Srila Prabhupada ki. And she sees now Krishna standing on the grinding mortar, and when he sees his mother, he gets scared and he jumps off and starts running away. और फिर भगवान श्री कृष्ण देखते हैं जब माता यशोदा को
माता यशोदा देखते हैं कि वो उखल पर खड़े थे। भगवान कृष्ण माता यशोदा को देखकर भयभीत हो जाते हैं और तुरंत उस पर सिर उखल से कूदकर भागने लगते हैं। So Mother Yasoda, she doesn't want to punish him, but she picks up a stick. माता यशोदा कृष्ण को दंडित तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक छड़ी उठा लेती हैं, Just to let him know she's in charge. सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए कि वो मालकिन है। So she's going after Krishna, वो कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, and Krishna's running, कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं, and she's running. माता भी दौड़ रही हैं, They're going this way and that way. इधर उधर दोनों दौड़ रहे हैं। She can't catch him. वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही हैं, Says nobody can catch him. क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाता। He's faster than the fastest. भगवान गतिमानों में भी सबसे अधिक गति वाले हैं। And Mother Yasoda is trying hard. माता यशोदा बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं। You know, she has big breasts and big waist, and she's trying to try to catch Krishna running this way and that way. वह अपने भारी शरीर के कारण दौड़ते हुए कृष्ण को दौड़कर पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। And while she's running, she's got some flowers in her hair. जब वो दौड़ रही थी तो उनके सिर पर कुछ फूलों का श्रृंगार भी था। And the flowers, they start talking to each other. और वो फूल भी आपस में बात करने लगे। One flower says to the other flower, "Who is this Mother Yasoda whose head we're on?" तो वो फूल आपस में बात कर रहे हैं कि माता यशोदा कौन है, भला हम किसके सिर पर आकर बैठ गए हैं। He's chasing after the Supreme Lord Bhagavan himself, and he's running in fear of her. Wow, she must be a great soul. तो वो लोग बात कर रहे हैं कि ये खुद परम पुरुषोत्तम भगवान का पीछा कर रही हैं और भगवान खुद इनसे डरकर भाग रहे हैं, और लगता है ये बहुत ही महान आत्मा होंगी। So the flowers start falling off her head and landing on her feet, because the flowers thought we should be at her feet because she's great personality. तो फिर वो जो फूल सिर पे थे वो वहां से गिरकर उनके चरणों में गिरने लगे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो महान आत्मा है, तो हम इनके सिर पर नहीं इनके चरणों में रहना चाहिए। And Krishna is fearful. He's really running from his mother. She's chasing him with a stick. और कृष्ण भयभीत होकर माता की छड़ी से डरते हुए भाग रहे थे। Some people say that he was feigning fear, or he was acting like he was fearful, but others say no, he was actually fearful. तो कुछ लोग टीका करते हैं कि वो सिर्फ डरे हुए का दिखावा कर रहे थे, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि वो वास्तव में डरे हुए थे। The answer is yes, he was actually fearful of his mother. तो उत्तर है कि हाँ, भगवान कृष्ण वास्तव में अपनी माता से डरे हुए थे। The Bhagavatam says, Krishna speaks in the Bhagavatam, death takes its toll out of fear of thee. Wind blows out of fear of thee. So many analogies saying all of creation acts out of fear of the Supreme Lord. तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मृत्यु है, वायु है, या फिर यहाँ पूरी की पूरी सृष्टि, वह मेरे ही भय से भयभीत होकर चलती है। But that same person who causes fear to all others is fearful from his mother. लेकिन यह पूरी सृष्टि जिससे भयभीत होकर अपना क्रियान्वयन करती है, वही अपनी माता से भयभीत होकर भाग रहे थे। And then, because this is his mood is Madhurya Ras, not Ras, but Madhurya, which means sweetness. When he's in Vrindavan, he is who he is. He's a little boy who gets afraid of his mother. He's the friend of his cowherd boys who wrestle and play with him and tell him he's useless. तो ये है भगवान श्री कृष्ण का भाव। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं तो अपना वृंदावन की जो लीला करते रहते हैं उसी के अनुसार से अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। जैसे कि वो जब वरिष्ठ ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं तो बाल के रूप में ही करते हैं, और जब वो अपने ग्वाल बालों के साथ रहते हैं तो उनके साथ कुश्ती करते हैं, और उनके साथ के जो मित्र बोलते हैं कि वो तो किसी काम का ही नहीं है। Radharani gets angry at him, doesn't want to talk to him, and he becomes unhappy. और जब
राधा रानी उनसे गुस्सा हो जाती हैं, उनसे बात नहीं करती, तो फिर कृष्ण दुखी हो जाते हैं। Lalita says to him, "You're always talking nonsense because you hang around with your buffoon type friends, you know." और ललिता भी उनसे गुस्सा जाती हैं कि तुम हमेशा फालतू की बात करते हो, तुम ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो। So this is the real Krishna. The other forms of Krishna are just expansions of the real Krishna. The real Krishna he is the sweet boy of Vrindavan. That's तो all. ये असली कृष्ण है, जो भी अन्य कृष्ण है वह इसी कृष्ण का विस्तार मात्र है। And it's only in Vrindavan that he exhibits his actual character as Shri Krishna. सिर्फ वृंदावन में ही श्री कृष्ण अपना जो वास्तविक कृष्ण का स्वरूप है उसको प्रदर्शित करते हैं। And so then Krishna is running and he's starting to think, boy, my mother must be getting tired. और फिर She was. She couldn't catch him and she was getting tired. तो कृष्ण इस प्रकार आगे दौड़ रहे थे और लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मेरी माता जो है थोड़ा थक रही होंगी, और वास्तव में उनकी माता थक गई थी। So Krishna decides to get caught. तो कृष्ण निर्णय करते हैं कि वे पकड़ा जाएंगे। And now she caught him. और अब उनकी माता ने उन्हें पकड़ लिया। And she's thinking, I have so many chores to do and this boy will make it difficult for me. So I have to tie him up. उनकी माता तो सोचने लगी मेरे पास दिन भर में इतना कुछ करने के लिए और ये लड़का मेरे को इधर उधर करके थका देता है, इसको चलो बांध देते हैं। And she also think that grinding mortar, he's a rascal too. और फिर वो सोचते हैं कि ये उखल भी दुष्ट है, चलो इसको भी बांध देते हैं। Because he helped Krishna steal butter, so he's also an accomplice. वो बोलती हैं कि ये जो उखल है ये भी कृष्ण को उसकी शरारत मक्खन चोरी करने में मदद करता है, ये भी दुष्ट है, दंड है, इसको ही बांध देते हैं। So she gets a rope. वो एक रस्सी लेती हैं and she ties it around the grinding mortar. उसको उखल के चारों ओर बांधती हैं। Now she tries to tie Krishna up. अब वो कृष्ण को बांधने का प्रयास Puts करती it हैं। around him. कृष्ण के चारों ओर रस्सी ले And जाती she हैं। notices it's 2 inches too short. उनको देखती हैं कि वो 2 इंच छोटी है रस्सी। So she gets another piece of rope. वो दूसरी रस्सी उठा कर ले आती हैं, Ties it to the first one. उसको पहली रस्सी में बांधती हैं। And she tries to tie him up again. फिर से उसको कृष्ण के किनारे बांधती हैं, Still 2 inches too short. फिर भी 2 इंच छोटी पड़ जाती रस्सी। So she's getting confused. फिर वो थोड़ा ऐसे संशय में आती And है। then all of this commotion that was happening, all the cowherd ladies, many of them came to see what was happening in Mother Yasoda's house. तो जब ये सब चल रहा था तो बहुत सारी जो गोपियां थी वो आकर देखी कि ये यशोदा मैया के घर पर क्या हो रहा है। So they saw, oh, Mother Yasoda's tying up her son. Let's help her. तो उन सभी ने देखा कि माता यशोदा अपने बच्चे को बांधने का प्रयास कर रही हैं, चलो उसकी मदद करते हैं। So they brought all kinds of rope. तो उन सबों ने हर जगह से अलग अलग तरह की रस्सी लाई। She was tying one piece of rope to another, tying it around Krishna, and still 2 inches too short. वे अलग अलग जगह से रस्सियों लाकर एक रस्सी में जोड़कर उसको कृष्ण के किनारे बांधने का प्रयास कर थी, लेकिन फिर भी वो 2 इंच छोटी पड़ रही थी। It's described they were bringing different color ropes. ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सारे रंगों की भी रस्सियां आई थी। Big ropes. बड़ी रस्सियां, Ropes for tying cows. गाय को बांधने वाली रस्सियां। And every time she tried to tie Krishna up by putting another piece of rope around, 2 inches too short. हर एक बार जितनी भी बार वो रस्सी बांधने का प्रयास करें 2 इंच छोटी आ रही थी। And she's laughing. और वो हंस भी रही थी। She can't figure out what's happening. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। With her laughter was a combination of frustration and laughter at the same time. उनका जो हंसी थी, उनको तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन साथ में बहुत ही उद्विग्नता भी हो रही And it थी। explains that Krishna wasn't getting any bigger. He was the same, little boy. और कृष्ण वैसे ही थे। He didn't get into his universal form. उन्होंने उस समय अपना कोई विराट रूप नहीं दिखाया। So finally, she doesn't know what to do. But then little Radharani comes along. She's a little girl, real small. तो माता यशोदा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, लेकिन उसी समय
राधा रानी उसमें वो छोटी सी ही बालिका थी वहां पर आई। Oh, Mother Yasoda's trying to time up little Lao. Let me help. और फिर उन्होंने देखा कि माता यशोदा ये कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं, चलो उनकी सहायता करते So हैं। she has a little tie in her hair, so she takes the tie out and she says, "You tie him up with this." तो फिर राधा रानी अपने बालों में एक फीता लगाई रहती हैं, उसको निकाल के देती हैं, बोलती हैं लीजिए इससे बांध दीजिए। Yeah, Mother Yasoda thinks nothing else is working. Let's try. तो फिर माता यशोदा ने सोचा इतनी सारी चीजें प्रयास कर चुके हैं, इसको भी लेकर बांध के देखते हैं। And as soon as she put that other piece, Krishna's tied up. और फिर जैसे ही उन्होंने उसको रस्सी में बांध के कृष्ण को बांधा, कृष्ण बंधा गए। Therefore, Radha Damodar. इसीलिए उनको कहते हैं राधा दामोदर। Not Yasoda Damodar, Radha Damodar. इसको राधा दामोदर कहते हैं। And this is Bhakti Siddhanta Saraswati gives his commentary explaining how Radharani came, and because of her, Krishna got tied up. तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये अपनी टीका देते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी आई और कृष्ण बंध गए। If you go to the Radha Damodar temple in Jaipur, they perform this pastime where Radharani has a vine and she puts it around Krishna. She holds it like this. The deity's holding the deity like this. So they perform that pastime during this month of Kartik. तो राधा दामोदर मंदिर जयपुर में जब हम जाते हैं तो वहां पर दामोदर महीने के सामने वो इस प्रकार का विग्रह रखते हैं कि जो राधा रानी है वो दामोदर को रस्सी से बांध रही हैं। Now Mother Yasoda is happy. Everybody leaves. Krishna's tied up. तो भगवान कृष्ण बंध गए, माता यशोदा खुश हो गई और सबके सब अपने अपने काम पे चले गए। And Krishna doesn't want to be tied up. और कृष्ण बंधे नहीं रहना चाहते। Well, what can he do? तो अब वो क्या करें? So he decides to call his friends. वे सोचते हैं कि अब Hey, Sridham, Kinkini, Ujjwal, Subal, come, untie me. तो वो भगवान कृष्ण अपने मित्र को श्रीदाम सुबल आ जाओ मुझको खोलो ऐसा बुलाने लगे। So they all come. वे सब आ जाते हैं। They're all Boy Scouts. They all know about ropes, you know. और वो सब That you'd have to be from America to get this one. You know, they know all about ropes and nuts because they're you know, they work with cows all the time. तो वो तो जो ग्वाल बाल हैं वो सब रस्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं। You got it. Okay. I don't know what he said, but it sounded like he knew what he was saying. And now the cowherd boys are trying to untie Krishna. और वो जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। And they're all trying. और वो सब प्रयास कर रहे हैं। And Krishna is saying, "Come on, untie me. I और want to कृष्ण go out and play." कृष्ण कह रहे हैं चलो मुझे जल्दी से खोल दो, हम खेलना है चल के। And they can't do it. और लेकिन वो खोल नहीं पा They're रहे all थे। trying. They're all expert at ropes, but they can't untie him. यद्यपि वो सब रस्सियां खोलने में एकदम दक्ष थे लेकिन फिर भी नहीं खोल पा रहे थे। And after some time, they all leave because they can't untie Krishna. और कुछ समय तक वो प्रयास करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते हैं तो सब चले जाते हैं। So why? Why couldn't they untie? तो क्यों नहीं खोल पाए? Because Mother Yasoda is in Vatsalya Ras and the boys are in Sakya Ras. So the knots of love were in Vatsalya Ras, and the cowherd boys were not qualified to untie the knots of Vatsalya Ras because they were only in Sakya Ras. क्योंकि माता यशोदा वात्सल्य रस में है और जो कि बाकी के ग्वाल बाल हैं वो साख्य रस में है। तो जो वात्सल्य रस में रस्सी में गांठें लगाई गई हैं उसको खोलने में साख्य रस के भक्त सफल नहीं हो पाए। Achha. And so now Krishna is thinking, but then Krishna remembers, oh yeah, my devotee Narada Muni has given me some service. तो फिर उनको याद आता है कि मेरे एक भक्त हैं नारद मुनि, उन्होंने मुझे कुछ सेवा दी है। Now Krishna is still tied up to the grinding mortar.
और कृष्ण अभी भी उसी ऊखल से बंधे हुए पड़े हैं। In a distance away, he sees these two big Arjun trees. और फिर वो देखते हैं दो बड़े बड़े यमल अर्जुन के वृक्ष They're glowing close together. जो आपस में एक साथ लगे हुए थे। But Krishna runs. कृष्ण दौड़ते हैं He's got the grinding board tied down to him. और अभी भी वो पीछे बंधे हुए हैं। And he runs right between the trees. वो पेड़ों के बीच से दौड़ के निकल जाते हैं, But the grinding mortar doesn't fit. लेकिन वो जो उखल है वो उसमें फंस जाता है। So it catches both trees, and with the force of Krishna's running, the trees go boom. They fall in a crossway right next to Krishna. तो लेकिन वो जो पेड़ है उसके बीच में उखल फंस जाती है और जब कृष्ण आगे दौड़ते रहते हैं तो उस झटके के कारण पेड़ उखड़ के कृष्ण के दोनों आजू बाजू गिर जाते हैं। And the sound was so loud that the cowherd men were thinking, "Oh no, another demon has come." और उससे इतना भयानक गर्जना हुई कि ग्वाल बाल जो वृंदावन वासी हैं उनको लगा कि लगता है कि कोई फिर से नया दानव आ गया है। And as soon as those trees fell, out of the trees came these two very effulgent, big demigods. और जैसे ही वो पेड़ गिरा उनमें से दो बहुत ही तेजस्वी देवता निकले। They were dressed with crowns and all their jewelry, and वे अपना मुकुट अपना सारे आभूषण सब कुछ धारण किए हुए थे they start offering prayers to Krishna. और वे कृष्ण से अपनी प्रार्थना करने लगे। And after some time, they disappeared. और कुछ समय बाद वे अप्रकट हो गए। Who were these two personalities? ये दोनों व्यक्तित्व कौन थे? They were sons of Kuvera, ये कुबेर के पुत्र थे, Manigriva, and what's the other one? Nalakuvara. Nalakuvara and Manigriva. इनके नाम थे मणिग्रीव और नलकुबेर। So what's the story? तो इनके पीछे की क्या कहानी है? They were in the heavenly planets, ये अपना स्वर्ग लोक में थे and they were sporting with some ladies और वो कुछ स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे in the Gandaki River, which is the Ganges that flows in the heavenly planets. वो गंदगी नदी में, जो कि No, not the Gandaki, but what is that? What is that river? Alaknanda, yeah. The Ganges in the heavenly planets has a different name. What is that? Mandaki. Yeah, the Mandaki River. Yeah, Mandaki. तो मंदाकिनी नदी में, जो कि स्वर्ग लोक की गंगा है, उसमें कीड़ा कर रहे थे। And they're demigods. They're son of the richest demigod, Kuvera. और वो सबसे धनी जो कि देवताओं में है कुबेर, उनके पुत्र हैं। And they're having fun with these ladies. तो वो उन स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे And they decide to go swimming. और उनके साथ वो वहां पे तैराकी कर रहे थे। And they were drinking all kinds of liquors. वो मदिरा का पान कर रहे थे। And everybody took off all their clothes. उन्होंने अपने वस्त्र भी उतार दिए। And they were jumping in the river with these ladies. उन स्त्रियों के साथ वो नदी में उछल कूद कर रहे थे। And then all of a sudden, Narada Muni Bhajai Vina Radhika Ramana Namre. He comes. कुछ समय बाद वहां पर नारद मुनि आते हैं And he sees the sight. और उस दृश्य को वो देखते He हैं, gets astonished. एकदम अचंभित हो जाते The हैं। girls, they notice, oh, here comes this sadhu. So they immediately ran to the shore and covered their bodies. तो जो स्त्रियां थीं वो देखती हैं कि यहाँ पे एक साधु आए हैं, तो तुरंत जाकर किनारे पर अपने वस्त्र से शरीर को ढक लेती But हैं। these two demigods, they practically ignored, although they saw Narada. तो लेकिन ये जो दोनों देवता थे, इन्होंने यद्यपि नारद मुनि को देखा लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। So Narada became angry. फिर नारद मुनि क्रुद्ध हो गए Oh, you want to run around naked? और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम ऐसे ही नग्न रहना पसंद करते हो, Therefore, I curse you to become trees. इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब वृक्ष बन जाओ। And the curse was so powerful that as soon as they heard themselves being cursed, they realized, wow, we're in trouble. और फिर वह जब श्राप सुने तो वो तुरंत एकदम
भयभीत हो गए और उनको लगा कि अब वो बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ गए। So they fell at the feet of Narada and begged him, please, 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 don't curse us. और फिर नारद मुनि के चरणों पर पड़ गए और फिर बोले कृपया करके हमें श्राप मत दीजिए। But it's too late. Once a curse is given, it cannot be pulled back. लेकिन वह बहुत ही अब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। एक बार जैसे ही श्राप दे दिया गया उसको वापस नहीं लिया जा सकता। Narada saw how they became repentant, they become humble. So he said, all right, you'll still become trees, but you'll be standing 100 years in the courtyard of Nanda Maharaj. And at one time, Krishna will come and free you from your tree body. उनके पश्चाताप को देखकर नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप 100 वर्षों तक नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बने रहोगे और उसके बाद कृष्ण आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। It's explained that there's different kinds of pride. इससे different kinds of pride. कई प्रकार के जो हमारा घमंड है, अभिमान है, उसका भी स्तर होता है। The pride of being born in a nice family. एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेने का अभिमान। The pride of having good knowledge, intelligence. अच्छा ज्ञान और बुद्धि का अभिमान। Pride of having a good position somewhere in the material world. अच्छी पदवी होने का अभिमान। The pride of being beautiful. सुंदर होने का अभिमान। These are all elements that can cause pride. ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें अभिमान हो सकता है। But in the commentary on this section, the acharyas give us the clear understanding. What is the most difficult pride? What is the most strongest form of pride? लेकिन इस भाग में टीका करते हुए आचार्य लोग हमें बताते हैं कि जो सबसे प्रचंड, सबसे बुरा अभिमान कौन सा है? And it explains the pride of wealth. और वो बताते हैं कि जो धन का अभिमान है वह सबसे खतरनाक है। And of all the types of pride that one may adopt, the pride of wealth is the most difficult to overcome. तो कोई भी सबसे कठिन जो भी अभिमान जिसके लिए समस्या का कारण बन सकता है वह है धन का अभिमान। I mean, Kuvera, he's the treasurer of the demigods. कुबेर देवताओं के खजांची हैं। He has all wealth at his access. उनके पास सारा खजाने का। In fact, he's so wealthy, he even lent money to Krishna once. Krishna needed some money. तो यहाँ तक कि कुबेर इतने धनी हैं कि अगर कृष्ण को भी कोई पैसा चाहिए होता है तो उनको देते हैं। And he also charged Krishna interest. और वो कृष्ण से भी ब्याज लेते हैं। Wasn't a straight loan. वो कृष्ण से भी सीधे नहीं रहते। And it's the story of Balaji Bantekeshwara. और यह बालाजी की फिर कहानी आती है। And that's a long story. So I don't think we have time for that. It takes about an hour to tell that story. But anyway, so they're the sons of this powerful and very rich demigod. So they're proud. तो चूंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली देवता के पुत्र थे इसलिए उनको अभिमान था। And you see, even in we experience people who are wealthy, very hard for them to become humble. और आप देखते हैं भी कि जो लोग बहुत ही धनी रहते हैं उनको विनम्र बनना बहुत ही मुश्किल रहता है। Of course, in India it's different because people understand that the fact that I'm wealthy is due to the mercy of Bhagavan. But in the West, you meet a wealthy person, they look at you like, who are you, you know? Right? तो भारत में लोग जानते हैं कि वो अमीर हैं तो भगवान की कृपा के कारण है, लेकिन पश्चिमों में तो आप किसी अमीर आदमी से मिलेंगे तो वो आपको लगेगा कि आप उनके सामने कौन हो, कुछ भी नहीं। So the curse was modified but still given. Now Krishna, he's still laying in between the two trees. तो श्राप इस प्रकार से उनको दिया गया था और कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में फंसे थे। And Nanda Maharaj and many of the cowherd boys, cowherd men, they came to see what was that noise. और नंद महाराज और अन्य भी वरिष्ठ गोप आए देखने की वो शोर कहाँ से आया था। And Nanda Maharaj, when he saw Krishna tied up to the grinding mortar and just in the middle of these two trees that had fallen, became concerned. He ran over, untied the knots because he's in Vatsalya Ras, and he freed Krishna.
और फिर नंद महाराज गए, भगवान देखें कृष्ण अभी भी उखल से बंधे हुए थे और दोनों तरफ उनके दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे थे। तो फिर नंद महाराज जाते हैं, वो उन गठानों को खोलते हैं, क्योंकि वो खुद भी वात्सल्य रस में है, इसलिए उनको खोल देते हैं। And everyone was wondering, how did these trees fall? They're big, gigantic trees. और सब अचंभित में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वह गिर पड़े थे। Some demon came and made the trees fall. क्या कोई राक्षस आया था जिसने इस वृक्षों को गिरा दिया? But some of the cowherd boys, the smaller ones, they saw that what Krishna did when he ran. और लेकिन जो छोटे छोटे कुछ ग्वाल बाल थे, उन्होंने देखा था कि जब कृष्ण किस प्रकार से पेड़ों के बीच में से दौड़कर आकर वृक्ष गिराए थे। And they start telling the cowherd men, it was Krishna, he knocked the trees down. And he's like 2.5, 3 years old, you know. तो फिर वो बालक बताने लगते हैं कि ये कृष्ण है, यही पेड़ों के बीच से दौड़कर आए थे और उसने ही पेड़ गिराए हैं, और उस समय कृष्ण 2.5-3 साल के थे। And the cowherd men are getting angry. They're thinking, why are these boys joking with us, you know? और फिर वो जो ग्वाल थे वो गुस्साने लगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ मजाक And they क्यों were कर रहे saying, हैं। no, it was Krishna. He did it. He ran and the grinding. It was Krishna. लेकिन वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, सही हम सच बोल रहे हैं, ये कृष्ण ही थे जो पेड़ों के बीच से दौड़ कर आए और उन्होंने ही पेड़ गिराए हैं। And after a while, they started to think, you know, there's a lot of strange things happening in Vrindavan. Maybe it was Krishna. तो फिर कुछ समय बाद उन सभी ने एक बैठक ली कि उन्होंने यह निर्णय किया कि यहाँ पे भी तो वृंदावन में बहुत ही सारी अद्भुत चीजें हो रही हैं। So now then Krishna, he's happy, he's with his father. और अभी कृष्ण अपने पिता के साथ हैं, खुश हैं। And he says to his father, Father, I want to stay with you. और उन्होंने बोला कि हे पिता, मैं आपके साथ ही रहूंगा। But what about your mother? His father says. तो उनके पिता कहते हैं आपकी माता का क्या होगा फिर? She's very unhappy. वो बहुत ही नाखुश हैं। And there she was, a distance away, seeing the whole thing. और वो वहीं पे थी, सब कुछ देख रही थी। So Nanda Maharaj, so Krishna looks at his mother. तो कृष्ण अपनी माता की ओर देखते And हैं, his mother looks at him. माता उनकी ओर देखती है And Krishna goes, और he's mad. कृष्ण अपना मुख दूसरी ओर कर लेते हैं। He is not happy what she did to him. वो अपनी माँ से खुश नहीं थे जो कि उनकी माँ ने किया था। But then Nanda Maharaj sees that his wife is she's really crying. She's unhappy. Krishna's mad at her now, so she's in distress. So he says to Krishna, go to your mother. लेकिन फिर जो नंद महाराज देखते हैं कि कृष्ण अपनी माता से बहुत नाराज और उनकी माता भी बहुत दुखी हैं, तो नंद महाराज कहते हैं कृष्ण से कि तुम अपनी माता के पास जाओ। And Krishna says, whatever you say, Father. और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। He didn't want to do it, but since his father, he likes his father a lot, so whatever his father says, he does. Whatever his mother says, he doesn't do. तो कृष्ण अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके पिता जो बोलते हैं वह करते हैं, जो भी उनकी माता कहती हैं उसको नहीं करते। Yeah, when you grow up in the family, your mother's chastising, you run to your father said, oh, it's okay, you know. तो जैसे भी आप घर परिवार में भी देखते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, आपकी माता आपको डांटती हैं, तो फिर आप अपने पिता के पास भाग के जाते हैं, तो पापा कहते हैं ठीक है, चलो सब ठीक है। Father is too lenient, mother is too strict. कि जो पिता है वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं और माता थोड़ा सख्त होती हैं। Yeah, you have experience. And so, but Krishna goes, and he's coming close to his mother, and his mother's looking, and then she opens her arms, and Krishna runs and jumps on her lap, and she offers her breast milk, and Krishna's happy, and everything ends happily ever after. और फिर कृष्ण अपनी माता की ओर जाते हैं, उनकी माता भी अपनी दोनों बाहें खोलकर कृष्ण का स्वागत करती हैं, कृष्ण अपनी माता को गले लगा देते हैं, उनका दूध पीते हैं, और इस तरह से वो हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। Now, this particular Leela, Krishna is very famous all throughout Krishna's Leelas as being the sweetest and the most, what we say, instructive Leela that we can learn many interesting
and important principles of bhakti. तो कृष्ण की जो लीला है बहुत ही जानी मानी, बहुत ही लोकप्रिय है, भगवान कृष्ण की सबसे मधुरतम लीलाओं में से है, और इनमें बहुत सारे दिशा निर्देश भी हैं जिनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं. For instance, the 2 fingers or the 2 inches too short indicates something very essential for devotees to know. तो जो रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, वो भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है Mother Yasoda has pure love for Krishna. कि माता यशोदा का कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, She still couldn't tie him up. फिर भी वो उन्हें नहीं बांध पा रही थी. Only when Krishna agreed to be tied up, जब कृष्ण सहमत हो गए कि वे बंध जाएंगे, then he became tied up. तब वो बंधे. So devotees know that in practicing bhakti, it is love that attracts Krishna. तो जो भक्त हैं, भक्ति का अनुशीलन करते हैं, उनको पता है कि ये जो भक्ति है वह कृष्ण को आकर्षित करती है. But even if you have love, Krishna may make you wait लेकिन यद्यपि आपको कृष्ण के प्रति प्रेम है, before he reveals himself to you. फिर भी कृष्ण आपको इंतजार करा सकते हैं अपने आप, Because he is independent. क्योंकि वो स्वतंत्र हैं. He's attracted by love. वह प्रेम के द्वारा जीते जाते हैं. But sometimes, many times, he likes to see his devotees love him in the mood of separation. क्यों, लेकिन कई बार वह यह चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनसे विरह के भाव में उनकी सेवा करें. That mood of separation intensifies the mood of love. क्योंकि यह जो विरह का भाव है, इससे प्रेम प्रगाढ़ हो जाता It है, makes it stronger. इससे जो प्रेम है और भी ज्यादा गाढ़ा बन जाता है. Because the devotee is always longing for Krishna. क्योंकि जो भक्त हैं हमेशा कृष्ण की अभिलाषा करते हैं, And because the love is there, they feel unhappy, but at the same time, because it's Krishna, there is a combination of happiness and unhappiness. और क्योंकि प्रेम उनको रहता भी है और साथ ही विरह भी रहती है, इसलिए उनके बीच में हमेशा सुख, प्रसन्नता और हर्ष और विषाद एक साथ चलते रहते हैं. So there's 2 kinds of ways to express love to Krishna. One is called Vipralamba Bhaga. The other is called Sambhog. Vipralamba means loving Krishna in the mood of separation from Krishna. And then the Sambhog means meeting love by meeting Krishna. भक्त लोग कृष्ण के साथ 2 प्रकार से अपना जो प्रेम है प्रकट करते हैं. एक है विप्रलंब यानी कि कृष्ण से वियोग में, और एक संभोग यानी कि कृष्ण के साथ युक्त होकर प्रेम प्रदर्शित करना. So Sri Chaitanya Mahaprabhu illustrates both of these. Yugaitam nimeshena chakshusha pravashaitam shunyaitam jagat sarvam govinda viramena me. That every moment away from you is more than 12 years or more. श्री चैतन्य महाप्रभु इन दोनों भावों को प्रदर्शित करते हैं और कि बताते कि किस प्रकार से ये भगवान के विरह में एक क्षण भी 12 वर्षों से भी अधिक के समान है. The hankering for Krishna in the mood of love makes time go so slow. कृष्ण के वियोग में समय जो है उसकी गति ही एकदम धीमे पड़ जाती है. Then the next verse, Alisya vapinaratam punastumam darshanam marmahatam karotu va yata tata va vidadatu lampato mat pranam nastu sa eva napuru. This is loving Krishna and when meeting Krishna. तो ये जो श्लोक है यह कृष्ण से प्रेम के बारे में और उनसे मिलने के बारे में भी है. These are Radharani's moods. ये राधा रानी के भाव हैं. She says, even though you're with me, even if you abuse me, neglect me, or don't talk to me or whatever, still my love is there. राधा रानी कहती हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं या फिर आप मेरा तिरस्कार करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपके प्रति प्रेम सदैव रहेगा. So this is bhakti, and this particular pastime illustrates that mood of separation where Yasoda couldn't tie Krishna up no matter what she tried to do until Krishna agreed. So the principle is that in devotional service, we do our best to serve the Lord, thinking
will the Lord come and accept my service? That is the mood of separation. तो ये जो लीला है इसमें विरह का भाव भी है। माता यशोदा प्रयास करती रहती हैं, लेकिन कृष्ण तब तक नहीं बंध जाते जब तक उनकी खुद की इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो हम अपनी सेवा करते रहें, लेकिन हमारे अंदर यह भी होना चाहिए कि कृष्ण आएंगे और उस सेवा को स्वीकार And करेंगे। sometimes Krishna appears to the devotee, accepts his service, the devotee becomes very happy, and then Krishna disappears. और He's gone again. What happened? और कभी कभी कृष्ण हैं, कोई भक्त उनकी सेवा करता रहता है और कृष्ण उसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वह भक्त बहुत ही खुश हो जाता है, और लेकिन फिर कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं। He constantly does that with his devotees just to increase their hankering in devotion. तो भगवान कृष्ण हमेशा यह अपने भक्तों के साथ किया करते हैं, अब कृष्ण अपने भक्तों का उनके प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। But that mood cannot be illustrated or demonstrated in the material sense. लेकिन उस भाव को भौतिक परिप्रेक्ष्य में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। You see, two people love each other. One goes away, the other one feels unhappy, can't wait for the other one to come back. The other one doesn't come back, so after some time, that person thinks, well, I'll just find somebody else. Yeah, I mean, they're patient, they're loving, but after some time they think, how can I live like this? He's gone, she's gone. So देखेंगे भौतिक जगत में जब भी कोई जोड़ा होता है आपस में, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ समय अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो आप धैर्य रखकर एक दूसरे का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो सोचते हैं कि भला हमारी जिंदगी कितने दिन तक ऐसे ही चलती रहेगी, फिर वो अपना दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। So it can only be done to its perfection towards Krishna. लेकिन कृष्ण के साथ यह पूरी तरह से पराकाष्ठा में होता Because है। Krishna remains in the heart of the devotee, even though the devotee is feeling separation from Krishna. तो क्योंकि जो कृष्ण है वह भक्त के हृदय में सदैव रहते हैं, उस समय भी जब भक्त कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहा होता That's है। why it is said that Krishna never leaves Vrindavan. इसीलिए कहते हैं कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। He remains there in the hearts of his devotees who are loving him in separation. क्योंकि वो सदैव अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं जो कि उनका विरह के भाव में सेवा करते रहते हैं। Okay, there's a lot we can speak, but it's already almost 10 after 9. So we can stop here. So today is the first day of Kartik. There's so many recommended austerities that one can adopt. But one of the most important of all of austerities is every day come and sing Damodar Astakam and offer your lamp, your Bhakti to Krishna in the form of this lamp. आज से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। आज से बहुत सारे जो हम लोग शपथ हैं या फिर तपस्या हैं वो कर सकते हैं, और इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन शाम को आइए, दामोदर अष्टकम का कीर्तन करिए और भगवान को अपना भक्ति का दीप अर्पित करिए। And the lamp signifies something very deep. और यह जो दीप है इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण It's अर्थ also है। called Deepa. So it's deep and it's all Deepa. इसको यह दीप है, दीप दीप। That's a play on words. But the point is that the lamp, the light from the lamp represents our love for Krishna. And so we're offering our love in this form of the lamp as we worship the Lord by singing the beautiful bhajan by Satyavrat Muni, glorifying Krishna's pastimes in Vrindavan. तो ये जो दीप है उससे जो आलोक निकलता रहता है वह हमारे भक्ति का प्रकाश है, जो कि हम यह दामोदर आरती का कीर्तन करते हुए, जो कि सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, भगवान कृष्ण की वृंदावन में लीलाओं का वर्णन करती है, उसको गाते हुए हम भगवान को दीप अर्पित करते हैं। So please come tonight at 7 o'clock for the beginning of Damodar Astika. तो इसलिए आज शाम को दामोदर अष्टकम कीर्तन शुरू हो रहा है, उसमें आइए। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bos, Shri Kartik Vrata ki jai. Thank you so much, Maharaj, for giving us super precious association.
Maharaj will be leaving for Indore tomorrow at 11 a.m. and from Indore, Maharaj will be leaving on 21st. So we are very thankful to you, Maharaj, for staying here for more than a month and like energizing us by your precious association, your aesthetic kirtan and your dancing kirtans as well, and through your nectarian lectures. We pray that we get your precious association again and again as much as possible. So Yeah, like to be here with all the devotees and the activities, for me, it was just so satisfying and so spiritually enlivening. So for me, it was a wonderful experience to be here. We thank all the devotees for their kindness, for their generosity, and for their tolerance. I mean, I'm not easy to tolerate sometimes, but devotees are very tolerant. Thank you. so we wish to express our gratitude Maharaj by chanting one time Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande, Hari Hari Bo.